जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर ओपीएस स्टडी चैनल। आपण माने जदि आम बैच को जॉइन करबा पई चाहुचंती ताहाले स्क्रीन ने दिया जाइथिबा कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट कर। हमर कांटेक्ट नंबर हेउची 6372270928। टॉपिक फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। तो आज टॉपिक रे हमें 30 टी एमसीक्यू कवर करवा और जहाँ भी एक्सप्लेनेशन अच्छी से देखा यार पीडीएफ मो व्हाट्सएप ग्रुप रे छाड़ देबी अपन सेटारो आउ टिके एक्सप्लेनेशन देखि नेबे। तो स्टार्ट करवा आज क्लास को। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासना इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो सुमन प्रोग्राम टा तार क्यों गोल बा तार मोटो कौन? To assure zero preventable maternal and newborn deaths and provide guaranteed dignified quality health care service to free of cost to pregnant women and newborn up to 6 months postpartum, to provide free solar power electricity to rural primary health center, to mandate female sterilization after 2 children nationwide, to eradicate vector-borne malaria and dengue in urban slums। तो हम करेक्ट आंसर कौन हम? हमर जो सुमन प्रोग्राम टा कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन प्रोग्राम रो गोल होची टू अश्योर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ एंड प्रोवाइड गारंटेड डिग्निफाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न अप टू 6 मंथ ऑफ पोस्टपार्टम। तो ये जो प्रोग्राम सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अंडर रे आमर कौन करा जाउथला ना मदर को आ बेबी को गारंटेड करा जाउथला कि प्रोवाइड करने गोटे डिग्निफाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विस जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट रे तांको प्रोवाइड करा जाउथिला। आ जो सिक न्यूबॉर्न जहार 6 मंथ पर्यंत 6 मंथ पोस्टपार्टम परे तार जहाँ भी ट्रीटमेंट से सब फ्री ऑफ कॉस्ट रे करा जाउथिला। एई जो प्रोग्राम टा से कवर करूथिला बोथ एंटीनेटल फेज को पोस्टनेटल फेज को एंड ड्यूरिंग लेबर रे जहाँ भी ट्रीटमेंट सब को से कवर करूथिला जहाँ कि नवेम्बर 2019 रे स्टार्ट हेइथिला। तो ये कौन करथिला ना गारंटेड करथिला कि 4टा एएनसी चेकअप को से फ्री करिथिला, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करुथिला, जीरो एक्सपेंस केयर फॉर कॉम्प्लिकेशन पाई, फ्री ट्रांसपोर्ट पाई, फ्री हेल्थ केयर फॉर सिक न्यूबॉर्न एंड मदर अप टू 6 मंथ ऑफ डिलीवरी पर्यंत से सब जिनस को आश्योर करुथिला। तो जो प्रोग्राम अंडर रे से कौन करथिला ना प्रिवेंटेबल मैटरनल न्यूबॉर्न डेथ बाय प्रोवाइडिंग एश्योर कॉम्प्रिहेंसिव हाई क्वालिटी एंड रेस्पेक्टफुल मैटरनल न्यूबॉर्न केयर विदाउट एनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। तो से बिना किसी एक्सपेंस रे यही सब जिनस जहाँ भी से सब जिनस प्रोवाइड करुथिला माँ को आ बेबी को। देखिए नवा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टारगेटेड कपल प्रोटेक्शन रेट जनरली एम्ड एट अंडर नेशनल डेमोग्राफिक गोल टू अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। जो हमारा नेशनल डेमोग्राफिक गोल अंडर रे आमे जो कपल प्रोटेक्शन रेट बा सीपीआर रेट रे केते परसेंट कपल को आमे कवर करबा कहा पई हमर गोटे स्टेबिलिटी आनिया पई पॉपुलेशन ग्रोथ रे। तो ये आम कौन करें आम जो रिप्रोडक्टिव एज रो फीमेल थांती बा जो कपल थांती तांको आम आश्योर करता कवर कर आम बेटर फैमिली प्लानिंग बा कंट्रासेप्टिव मेथड उपरे तांको एजुकेट करा जाय थाए आ प्रोवाइड करा जाय थाए जहाँ फल कि लॉन्ग टर्म रे आमर जमी पॉपुलेशन ग्रोथटा स्टेबल हो पारिबो। तो ये प्रोग्राम रे केते पॉपुलेशन आमर कवर हुए 30 to 40%, 60 to 65 और हायर परसेंट, 100% कंपलसरी एनफोर्स, 10% to 15%। तो आम करेक्ट आंसर हम 60% to 65% आमर 60% to 65 और हायर परसेंट आम कपल को कवर करने ट्राए करवा। जो रिप्रोडक्टिव एजटा फिमेल मानकर केते रहिबो 15 ରୁ 44 कि 49 वर्ष पर्यंतर फिमेल मानक आम मोस्टली यही प्रोग्राम अंडर रे कि कपल प्रोटेक्शन रेट अंडर रे रखिबा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which permanent male sterilization method is promoted under India's family welfare program as a safe, simple, scalpel free procedure? तो आमर जो स्टेरिलाइजेशन मेथडटा दी प्रकार होता है कहते गोटे टेम्परारी बा स्पेसिंग आउ गोटे परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड जो कि परमानेंटली आम कौन करवा ना फैमिली परमानेंटली आम कंट्रासेप्टिव मेथड एटा आउ आम फ्यूचर रे कर सारा पर आम फ्यूचर प्रेगनेंसी कनसीव करें ना। तो यही जो प्रोसीजरटा ए कौन क्वेश्चन दि जाइए मेल मानक गोटे स्काल्पेल फ्री आउ सेफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामटा जोटा कि इंडिया रे प्रमोट करा जाए तार ना कौन स्काल्पेल वैसेक्टोमी नॉन स्काल्पेल वैसेक्टोमी ओर्चियोक्टोमी लाप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन फॉर मेल्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम नॉन स्काल्पेल वैसेक्टोमी आमर स्काल्पेल वैसेक्टोमी भी होता है आ नॉन स्काल्पेल वैसेक्टोमीटा बिना स्काल्पेल यूज करिकी सिंपल भाव में मेल स्टेरिलाइजेशन को प्रमोट करी थाए जहाँफल कि आमर स्टेरिलाइजेशन बा फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामटा ठीक रे वर्क करी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी फीमेल परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड परफॉर्म इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया? तो फीमेल मानक केउटा गोटे परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड जोटा कि इंडिया रे अक्रॉस इंडिया एटा को फॉलो करा जाउछि हिस्टोक्टोमी लाप्रोस्कोपिक ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन बा मिनिमल लाप्रोक्टोमी ओफ्रोक्टोमी एंडोमेटेरियल एलिवेशंस। तो आमर करेक्ट आंसर कौन हम लाप्रोस्कोपिक ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन बा ट्यूबोक्टोमी बा मिनियल पैरोक्टोमी यह द्वारा आमर परमानेंटली फीमेल मानकू स्टेरिलाइजेशन मेथड स्टेरिलाइजेशन बा कंट्रासेप्टिव मेथड रे रखा जाउछि इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन What is the primary focus of weekly iron and folic acid supplement program implemented by Minister of Health and Family Welfare in India? जो आमर वीकली आयरन और फॉलिक एसिड प्रोवाइड करा जाउछि सेटा काहेकि बा सेटा काहेकि फोकस करा जाउछि इंडिया रे to combat high prevalence of nutritional anemia among adolescent boy and girl in school and out of school setting, to target postpartum hemorrhage in maternity ward, to provide iron supplement exclusively to pregnant women in third trimester, to fortify commercial cooking oil with iron। तो ये जो प्रोग्रामटा आमर कौन वाईफाइस किंबा वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशनटा आमर करा जाउछि सेटा कहा पई और काहेकि तार फोकस करा जाउछि दा फोकस करा जाउछि टू कॉम्बैट हाई प्रिवेलेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया एमंग एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल एज 10 to 19 इन स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल सिटिंग। तो आम देखिथिबा कि स्कूल टाइम रे कि स्कूल रे आउट ऑफ स्कूल रे वीकली गोटे गोटे आयरन टैबलेट आमको दिया जाए बोथ मेल एंड फीमेल को कौन पाई दिया जाए आमर बढ़ेवाई आमर कहार आयरन को बढ़ेवाई आम यही टैबलेटा दिया जाई थाए। तो यहाँ केते mg रो थाए कंटेनिंग 10 mg एलिमेंट आयरन एंड 50 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड एथिरे थाए जोटा कि स्कूल गोइंग एडोलेसेंट इन ग्रेड 6 through 12। तो 6 through 12 एज पर्यंत आज वेल एज आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स भाया अंगनवाड़ी सेंटर एलॉन्ग साइड बाईमानुअल। तो यही जो जिनसटा आम केमी दि जाए जिते स्कूल रु 6 ରୁ 12 वर्ष पर्यंत दि जाए आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल मानक एटा प्रोवाइड करा जाए केतेबेले कहा द्वारा अंगनवाड़ी सेंटर गुड़ाक द्वारा प्रोवाइड करा जाए कहीं प्रोवाइड करा जाए आयरन मात्रा बढ़ावाई न्यूट्रिशनल आयरन मात्रा बढ़ावाई कारण जो एडोलेसेंट गर्ल मानकर कि बॉयज मानकर मेनली गर्ल मानकर मेंस्ट्रुअल साइकिल रे ताकर बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाए। तो से आमर आयरन सप्लीमेंट आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दबार निहाती आवश्यकता रही। तो जो टैबलेट रे केते कौन थाए 10 mg आयरन थाए आउ 500 mg 100 mg आयरन थाए आउ 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन
What is the expanded form and primary mandate of राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन? तो जो एक्सपांडेड आउ प्राइमेरी मैंडेट कहार राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम जोटा कि कहा अंडर थिला नेशनल हेल्थ मिशन अंडर अच्छी तो तार कौन प्राइमेरी मैंडेट बा प्राइमेरी गोल कौन? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम an initiative focus on early screening and initiative for 8Ds defect at birth, deficiencies, disease and developmental delays and disability in children from birth to 18 year, rural blood supply, Kisan scheme for emergency transfusion, reproductive birth safety कार्यक्रम for institutional delivery, national breastfeeding support कार्यक्रम। तो ये कौन पाई है थाए? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रमटा फोकस करी थाए कहार? an initiative focus on early screening and intervention of 4Ds। तो ये चारिटा डीज तो फास्ट डीज कौन? डिफेक्ट एट बाथ, सेकेंड होची डेफिशिएंसी जोटा कि न्यूट्रिशनल वैल्यू पाई किसी भी डेफिशिएंसी थिबो, डिजीज कौन सी प्रकार डिजीज थिले, डेवलपमेंटल डिलेज बा डिजेबिलिटी। जानिले हमर चारिटा डी कौन? बाथ टाइम रे डिफेक्ट थिले, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थिले, किछि डिजीज हेले किंबा डेवलपमेंटल डिले किंबा डिजेबिलिटी थिले इन चिल्ड्रेन फ्रॉम 18 वर्ष पर्यंत पिला मानकर एई योजना अनुसार तांकर केयर प्रोवाइड करा जाय थाए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाय थाए आ जहाँ भी तांकर प्रोसीजर पे दरकार से सब जिनस प्रोवाइड करा जाय थाए जोटा कि लॉन्च हेतिला फेब्रुआरी 13 रे लॉन्च हेतिला। देखिमा फेब्रुआरी 2013 रे लॉन्च हेतिला। What is the primary role of an auxiliary nurse midwifery stationed at subcenter under Indian rural health infrastructure? तो आमर जो इंडियन रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रे ANM मानकर काम कौन सबसेंटर रे बा ANM माने कौन करि थांदी सबसेंटर रे? provide grassroots maternal and child health service, antenatal care, family planning, counseling, immunization and domiciliary deliveries, performing major abdominal surgery and cesarean section are subcenter, managing district level financial budget and procurement technique, teaching postgraduate medical student in teaching hospital। तो कौन काम थाए एनएम मानकर सबसेंटर रे? providing grassroots maternal and child health service, antenatal care, family planning, counseling, immunization and domiciliary deliveries। तो ये कौन करी थांदी ना एएनएम माने सब सेंटर रे थांदी से कौन ना ग्रासरूट लेवल ले लोक मान को कम्युनिटी रे हेल्थ केयर प्रोवाइड करी थांदी, तांको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करी थांदी, से माने मेन फोकस करी थांदे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस को, एंटीनेटल केयर को, फैमिली प्लानिंग विषय काउंसलिंग करी थांदी और प्रोवाइड भी करी थांदी किछि किछि जिंस, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करी थांदी आउ कोन करी थांदी ना डोमेस्टिक डिलीवरी को परफॉर्म मध्य करी थांदी। देखिनबा आउ किछि डिटेल रे ANM आर द बैकबोन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल फॉर registering pregnant women, providing antenatal checkup, administering vaccine under universal immunization program, distributing contraceptive, identifying high risk pregnancy and promoting institutional delivery। तो यही सब जिनस से माने करि थांदी जो हमर सब सेंटरटा केते पॉपुलेशन भितरे थाए 3000 ରୁ 5000 पॉपुलेशन मध्य रे थाए डिपेंडिंग ऑन हिली एंड प्लेन एरिया। What is the primary population norm establishing a primary health center PHC in plain area and versus hilly, tribal and difficult terrains under the Indian public health standard? तो अंडर पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड अनुसार आमर हिली एरिया और प्लेन ट्राइबल डिफिकल्टीज एरिया रे PHC टा केते पॉपुलेशन भितर रहिबो सेटा हमें देखिबा। तो ऑप्शन देखिनमा 30,000 population in plain area and 20,000 in hilly tribal area। Option B 1 lakh population in plain area and 50,000 population in hilly area, 5,000 population in plain area and 2,000 in hilly area, 5 lakh population in nationwide। तम करेक्ट आंसर कौन हम?
30,000 population in plain area and 20,000 in hilly किमा ट्राइबल एरिया थिले पॉपुलेशन थिले आमे पीएचसी रखी परिबा आ सब सेंटरटा आमर केते भितर रहबा सब सेंटर सर 50,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया 30,000 इन हिली एंड ट्राइबल एरिया पीएचसी टा से भली 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया 20 होची हिली एरिया एक्टिंग एज द फास्ट रेफरल यूनिटी फॉर सब सेंटर with 4 to 6 in patient bed तो आमर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर रे 4 ରୁ 6टा पेसेंट बेड थिबो जोटा कि फास्ट रेफरल यूनिटी कहार सब सेंटर रो से भली आम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किंबा सीएचसी को देखिबा CHC सर्व 1,20,000 population in plain area and 80,000 in hilly and tribal area functioning as 30 bedded hospital with specialist medical officer तो आमर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बा CHC रे 30 बेड थाए पीएचसी रे 4 ରୁ 6टा बेड थाए आउ आमर कौन हुए ना CHC टा सर्व करी थाए केते पॉपुलेशन को 1,20,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया एंड 80,000 पॉपुलेशन इन ट्राइबल आउ हिली एरिया रे देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द खाजरी or emergency contraception pills distributing scheme implement through ASHA worker in India to provide doorstep access to emergency contraceptive pills by ECPs for preventing unintended pregnancy following unprotected intercourse within 72 hours to induce permanent sterilization at home to treat severe postpartum hemorrhage to provide therapeutic abortion pills without medical supervision तो आम करेक्ट आंसर कौन हम टू प्रोवाइड डोर स्टेप एक्सेस emergency contraceptive pills बा ECPs for preventing unintended pregnancy following unprotected intercourse within 72 hours तो आमर जो पिलटा आशा द्वारा डोर स्टेप रे प्रोवाइड करा जाय थाए जोटा कि गोटे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्सटा ता भितर थाए कौन लिवोनर्जिस्टेरल 1.5 mg थाए जोटा कि डोर स्टेप रे प्रोवाइड करा जाय थाए आउ ताको प्रॉपर काउंसलिंग आशा द्वारा दिया जाय कि से वुमेन मान को प्रोवाइड करा जाय थाए जोटा कि 72 आवर किंबा अप टू 120 आवर विथ रिड्यूस एफिशिएंसी थिले एई एतिकी समय भितर आमे वुमेन मान को देई परिबा intercourse pare which national program is specially integrate maternal health child health immunization family planning and adolescent health into unified RCHII life cycle approach तो जो आमर RCH2 बा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फेज 2 रे आमर कौन जो नेशनल वाइड प्रोग्राम हेइथिला तार कौन अप्रोच थिला रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फेज 2 अंडर नेशनल हेल्थ मिशन नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम तो आमर जो RCH2 ता कहा को फोकस करथिला एटा कहा अंडर रे थिला रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फेज 2 अंडर नेशनल हेल्थ मिशन तो आमर जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम टा आमर कहा अंडर रे थिला नेशनल हेल्थ मिशन अंडर रे थिला build of RCH1 reproductive child health phase 1 was launched to adapt a holistic life cycle approach to family welfare and public health RCH2 emphasizing the continuous care of adolescent pre-pregnancy antenatal postnatal period infancy and childhood ensuring decentralized district action plan and united funds and strengthening the public health इंस्टीट्यूशन यही सब जिनस फेज 2 रे हमर ऐड करा जाई थिला व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ MTP बा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड इट्स रिसेंट अमेंडेड इन इंडिया रिगार्डिंग सेफ अबॉर्शन सर्विस तो हमर जो MTP एक्ट टा करा जाई थिला तो तार प्राइमरी गोल कोन हमर न्यू अमेंडमेंट एक्ट अनुसार
बा रिसेंट जो अमेंडमेंट एक्ट अच्छी ता अनुसार 2 वाइडेन लीगल एक्सेस टू सेफ कॉन्फिडेंटल एंड रजिस्टर अबॉर्शन सर्विस एक्सटेंडिंग जेस्टेशनल लिमिट to 24 week for specially category of women to prevent unsafe abortion and maternal mortality, to make abortion compulsory for all the families exceeding 2 children, to ban all abortion service nationwide without exception, to restricted abortion care exclusively to prevent the cooperative hospitals. ଆମ करेक्ट आंसर कौन हम टू वाइडेन द लीगल एक्सेस ऑफ सेफ कॉन्फिडेंटल एंड रजिस्टर अबॉर्शन सर्विस एक्सटेंडिंग जेस्टेशनल लिमिट to 24 week specially categories of women to prevent unsafe abortion and maternal mortality. तो जो नुआ एमटीपी एक्ट कि पुराना एमटीपी एक्टा केबे हेतिला 1971 रे हेतिला तो ये जो एक्ट एबे नुआ हेतिला 2021 मसीह रे सी कौन कला ना आमर जो जेस्टेशनल एजटा थिला 20 थिला तो तार जेस्टेशनल एज 20 को बढ़ेगी 24 करा जाइथिला तो 24 जेस्टेशनल एज 24 भितरे आमे लीगली अबॉर्शन करि परिबा आउ तार जो अबॉर्शनटा जमिति सेफ हबो मैटरनल मोर्टालिटी रेट जमिति कमिबो ताकू एम्फासाइज बा ताकू आखिरे रखी कि ए सब जिंस करा जाइथिला तो यार देखि नबा एक्सप्लेनेशन आउ टिके द की अमेंडमेंट इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग द जेस्टेशनल लिमिट फ्रॉम 20 to 24 फॉर स्पेसिफिक vulnerable categories of women survivor of sexual assault rape minor and different adult and fetal abnormalities diagnosed by medical boards, replacing the required of 2 opinion with one provider of 20 weeks and protecting the women confidentially and bodily autonomy. तो ये जो थी क्या स्पेशल केस वोमेन मानकर जो जेस्टेशनल एज थाए ताकू बढ़ाई देगी 24 जेस्टेशनल 24 पर्यंत आबॉर्शन टाक कर क्यों वोमेन माने जो माने सेक्सुअली अब्यूज्ड होता रेप होता है माइनर था डिफरेंट एबुल बा मदर किसी एबुल्ड थाए कि फिटाल एबुल्ड बा अबनॉर्मालिटीज थाए तो यही सब जिनस मेडिकल बोर्ड अंडर मेडिकल बोर्ड कनसर्न अनुसार जो 2टा ओपिनियन दरकार होता ताकू बिना रिप्लेस करा जाइकी जमिति 20 वीक रे करा जाउथला सेमिति 24 वीक रे हमर कोन एमटीपी एक्ट अनुसार अबॉर्शन करा जाई परिबो. Which indicator is considered the most sensitive global and national benchmark reflecting the overall success of maternal and child health and family welfare program. तो आमर जो सब मैटरनल आउ चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जहाँ जो भी सब प्रोग्राम आमर होची तो सेटा सक्सेस हैला कि तार जो की बा तार मोटोटा कौन बा कौन देखिले मैं जानिबा कि आमर ए सब जिनसटा सक्सेस होची किंबा फेल्योर होची कि नुआ जिनस ऐड करबा कि जहाँ भी तो आमे काहाकू फॉलो करबा मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो MMR and infant mortality ratio IMR किंबा total literacy rate among adult males, total number of registered private vehicles, per capita agricultural export values. तो आम करेक्ट आंसर कौन हम मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो MMR and infant mortality rate IMR. तो ये जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो MMR measured पर 1 lakh life birth and infant mortality rate IMR measured per 1000 life birth are internationally recognized vital public health indicator. They directly reflect the efficiency, accessibility, quality and coverage of the nation healthcare infrastructure, maternal and child health intervention, nutritional program and family welfare program in India sustain public health effort through NRHM, JSY, JSSK, PMSMA and Lakshya have contribute to progressive decline in both MMR and IMR nationwide. तो यही सब जिनस हमर नेशनवाइड MMR और IMR को कम करिवारे ए सब प्रोग्राम गुड़ाक स्टार्ट करा जाइछि आ ए सब प्रोग्राम गुड़ाक इफेक्टिवली वर्क करूचंती MMR और IMR रेट को कम करिवा पई.